As you all know, in the previous video, I got an error. So now in this video, I will tell you how I fixed this error. In this code, there is a two functions with the exact same name and parameters. So इसलिए मुझे ये error face करना पड़ा. एंड जो C++ होता है वो अलो नहीं करता है दो आइडेंटिकल फंक्शंस को, बिकॉज इससे जो कंपाइलर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और समटाइम्स ये ओवरलोड कॉन्फ्लिक्ट का भी कारण बनता है. एंड ये सही करने के बाद देन मैंने थोड़ा अपना मतलब जो कोड था उसे सुधारा, देन सबमिट करा एंड अगेन आई फेस द एरर because I forgot to put an semicolon. And now I will run the code. Results is perfect, and then submit the code, and the results passes all the cases perfectly. And the last thing was that if you want to know why C++ does not allow two identical functions, then comment me. I will also make a video on it. Bye bye.